So very very good evening to all of you. Welcome back. So स्वागत आप सभी का एक बार फिर से JAIIB CAIIB वाला पे. So जहाँ पे आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉड्यूल सी को एंड मॉड्यूल सी से रिलेटेड फाइनल क्लास, तो जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन जिनको आपका डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो एवरीवन दोज हु आर वाचिंग लाइव, do mention into the comment section so we can start this session and try to answer these particular questions into the comment section, right? Chalo, so without any further delay we will start our today's session with very first question on your screen. तो पहला क्वेश्चन आपका about siphoning of funds. Okay, so question is about siphoning of funds can be best defined. So siphoning of funds is basically diversion of funds. Like suppose that there is a company who took loan from any XYZ bank for some ABC purpose, but they are not using that particular money for that ABC purpose, they are using for something else. ठीक है, तो जैसे कॉर्पोरेट में काफ़ी ज़्यादा चलता है. ठीक है, सो जैसे जो कंपनी के पैसे को अपने पर्सनल यूज़ के द्वारा किसी मैनेजर के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड शिफोनिंग ऑफ फंड्स, राइट? सो फंड्स आर इफेक्टिवली यूज इफेक्टिवली, नो. Funds are used for related, no. Funds are used for unrelated purpose and operations of the business, so that is called chiffoning of funds. ठीक है, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट. So chiffoning of funds means diversion of funds, especially in case where stock hypothecated to cash credit limit and funds are utilized for unrelated purposes other than the loans and others. ठीक है, so पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, a three-stage approach is used to measure expected credit losses on financial instruments accounted for an amortized cost. Which of the following is not one of the three stages that financial asset will migrate through based on changes in credit quality? So we have 12 months, right? So we have 12 months ECL, expected credit losses. We have lifetime credit impaired, and we have lifetime non-credit impaired, right? So it is not part of that one. So option A will be correct answer for this particular question. Okay, so stage 1 is 12-month ECL. This stage applies that a financial instrument has low credit risk and the reporting date and there has been not been a significant increase in credit risk. Second is lifetime ECL, non-credit impaired. This stage implies when a financial instruments has experienced a significant increase in credit risk. And third one is credit impaired, so where we do have this, or it can evidence of losses and others. Okay, chalo next one. Suppose a banking company has obtained borrowing from a National Bank for Agriculture and Rural Developments. It will be shown as dash under the heading of borrowings in India. So basically जो banks हैं उनकी जो borrowings है, borrowings in India और outside India. ठीक है, तो India के जो borrowings है that is part of borrowings from other banks, borrowing from RBI, borrowing from other institution and sources. ठीक है, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? थर्ड विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, सो बोरोविंग इन इंडिया वी हैव बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, अदर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज. ठीक है, तो थर्ड आपका जो था इसमें करेक्ट आंसर था. एंड द अदर पार्ट इज बोरोविंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट वन. इफ अ बॉन्ड of face value 1000 carries a coupon interest of 5%, is quoted in market at 1200, that means current market price is this, then current yield of the bond is, तो इस bond का current yield आपको calculate करने के लिए बोला गया. ठीक है, so how we calculate current yield equal to interest payment. Okay, interest divided by current market price. So interest amount how much in this case? So their face value is 1000 and the coupon rate is 5%. So 5% of 1000 equal to 50. So this is the interest payment. Okay, so interest payment will be this during this period. So it is 50 divided by how much? 1200. So the outcome will be your answer. If you will divide 50 divided by 1200, so the numbers percentage multiplied by 100. Okay, so it will come around 4 and 5. Okay, so these out of these two options it will be correct answer. So it is option C. I'll show you the calculations also. Okay, so current yield equal to coupon interest divided by current market price. So that means
If you divide 50 divide 1200, so it is how much? So 50 divided by 1200 into 100, so it is 4.16, right? So current yield के ऊपर हर साल क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है? तो खाली आपका मतलब कूपन रेट आपके पास है, आपके पास फेस वैल्यू है और current market prices. You just have to do this calculation and you'll get 1 marks in your upcoming examination. Next one. Dash are issued with no interest payment during lifetime. That means they are issued on discount, and investor can get the bond at deep discounted at the time of purchase and sell them at par value or face value. ठीक है? तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करती है, so suppose that their bond their face value is 1000 and they issued these particular one on discount, ठीक है? जो issue value है that is suppose that 800 rupees, ठीक है? So there is no coupon rate in these kind of bonds. यहाँ पे आपका कोई coupon rate commit आपका नहीं किया जाता है, ठीक है? So that means if you'll invest 800 rupees at the time of maturity, you'll get 1000 rupees. ठीक है? So 1000 rupees, you'll get this particular one. So these type of bonds are generally known as zero coupon bonds. ठीक है? Other bonds में क्या होता है, जहाँ पे एक specific rate of interest होता है. Usually कैसे मिलेंगे आपको, जैसे कोई XYZ कंपनी ने आपका इशू किया for 15 years. Face value is suppose that 100 and the coupon rate is suppose that 6% per annum which is payable half yearly. ठीक है? ऐसा आपको मिलेगा. बट जो जीरो कूपन बॉन्ड्स, कूपन मीन्स इंटरेस्ट रेट, तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं है. अब इंटरेस्ट रेट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इस पे आपका रिटर्न्स नहीं होंगे. ठीक है? सो दैट इज द लॉजिक, राइट? चलो नेक्स्ट वन. The dash is used when currency exchange occur after time of spot date. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, when settlement is done after spot date, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, it is called forward. ठीक है? तो हमने ये चीज समझा था, कैश इज t plus 0, that means t means trading day, 0 is 0 working days. ठीक है? सो अगर कोई ट्रेड आज हुआ, आज ही सेटल हुआ, सो इट इज कॉल्ड कैश. अगर कोई ट्रेड आपका कल हुआ था और आज हुआ और अगर वो कल सेटल होता है एक वर्किंग डे में, तो टॉम. अगर वो आपका स्पॉट डेट में होता है तो 2 वर्किंग डेज में, इट इज कॉल्ड स्पॉट. और फॉरवर्ड इज लाइक कि जहाँ पे इफ सेटलमेंट टुक प्लेस इन द फ्यूचर और एनी डेट आफ्टर दिस स्पॉट, सो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड. जैसे हमारा केस है, ठीक है? आज ट्रेड हुआ, 6 महीने बाद सेटल हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आपका फॉरवर्ड. ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने कल भी आपको सिखाए थे, पूरा फॉरेक्स वाले जो क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें आपका जो वैल्यू डेट कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन. ठीक है? नेक्स्ट वन. ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरेशन एक्सेप्ट, एक को छोड़ के. ठीक है? तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं आपके बॉन्ड्स की, एक को छोड़ के आपका. ठीक है? तो पहला, बॉन्ड्स ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू इट्स term maturity if and only if there is a zero coupon bonds. तो अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, दे आर लाइक वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड आपके नहीं होते. ठीक है? सो इन दैट केस इफ सपोज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे इशू दैट बॉन्ड फॉर 15 years, सो देयर मेच्योरिटी इज 15 years. ठीक है? वहां पे ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. ठीक है? देयर ड्यूरेशन विल इक्वल टू देयर मेच्योरिटी. अदर केसेस में ड्यूरेशन और मेच्योरिटी में डिफरेंस क्या है? So suppose that there is a bonds which is issued for 15 years, so that is their maturity. एक इन्वेस्टर जिसने उसको एक साल के लिए खरीदा बेचा, so जितना जो बाई सेल उसने किया उस कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है that is called duration. ठीक है? So duration is less than the term of maturity. It can be, ऐसा हो सकता है इन नॉर्मल केसेस कि जहां पे जैसे एक साल मेच्योरिटी ड्यूरेशन था, 15 साल मेच्योरिटी था. ठीक है? ड्यूरेशन एंड YTM आर इनवर्सली रिलेटेड, अगेन ट्रू. लार्जर द कूपन रेट स्मॉलर, ओके हाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इट शुड बी स्मॉलर द ड्यूरेशन. ठीक है? सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, सो दैट मीन्स डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है? तो ये बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज आपका, ठीक है, अबाउट द ड्यूरेशन बहुत बार टेस्ट की जाती हैं, सो इनको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करें तो आपको हेल्प करेंगे. ठीक है? प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन और है. इफ द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इज क्या है, इंक्रीजिंग, द मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड विल डिक्रीज. इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे अभी हमने बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में बात किया. सो इफ इट इज इंक्रीजिंग इट विल डिक्रीज, और इफ इट इज डिक्रीजिंग इट विल इंक्रीज. ऐसा रिलेशन आपका, इनवर्स रिलेशन आपका रहेगा. ठीक है? सो इंक्रीज डिक्रीज तो ए आपका, ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज नहीं, ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज नहीं. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, दे हैव इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन चलता है इन दोनों में. ठीक है?
तो अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो अगर इंटरेस्ट रेट आपका मार्केट में बढ़ेगा तो उसका मार्केट जो प्राइस ऑफ बॉन्ड्स का वो क्या होगा, घटेगा. तो दैट काइंड ऑफ रिलेशन. नेक्स्ट वन, Amit purchased a car by obtaining a loan on a simple interest. The car cost is 2 lakh and the interest rate is 9% per annum, simple interest. If the loan is to be paid after 5 years, तो calculate SI, ठीक है, इंटरेस्ट पेड आपका या टोटल अमाउंट पेड. अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ठीक है, आपके मॉड्यूल सी के अंदर जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज है उसका क्वेश्चन है, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है. सो P इज प्रिंसिपल 2 लाख, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इक्वल टू 0.09, T इज हाउ मच 5 ईयर्स, ठीक है. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है. इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा तो आप 2 लाख में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है. कितना आ रहा है आपका ये, सो आई विल शो यू द सॉल्यूशन, ठीक है. सो इट इज कितना आपका 10, ठीक है. तो हमारा इंटरेस्ट कितना था 90,000, तो 2 लाख प्लस 90,000 इट इज 2,90,000. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है. अगला एक और क्वेश्चन. सो अ स्टूडेंट परचेज अ कंप्यूटर ऑब्टेनिंग लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट. कंप्यूटर कॉस्ट 60,000, इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. इफ द लोन इज पेड बैक आफ्टर 2 years, तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो अगेन आपका P इंटू आर इंटू टी. P इज हाउ मच 60,000 इंटू आर इज 12% 0.12, T इज 2 years, ठीक है. तो इससे आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा. सो विल गेट इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसको आप 60,000 में ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी योर आउटकम, ठीक है. सो इंटरेस्ट इज 14,400 P इंटू आर इंटू टी, एंड 14,400 प्लस 60,000 जो इसका प्रिंसिपल था, सो इट बिकम 74,400, ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. Which rule help the determine the approximate number of years before a person's money double with yearly compounding? तो किस में आता है, रूल ऑफ 72, ठीक है. तो रूल ऑफ 72 स्टेट दैट, लाइक जो आपको हेल्प करता है कि कोई भी, जैसे सपोज दैट योर इंटरेस्ट रेट इज सपोज दैट 10% पर एनम, ठीक है. तो अगर कोई आपको 10%, आपने इन्वेस्ट किया है 5 लाख, तो अगर सवाल ये होता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट डबल फ्रॉम 5 लाख रुपीज टू 10 लाख, तो हाउ यू विल कैलकुलेट 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है. सो 10, सो विच इज 7.2 years. So it will take 7.2 years to get from 5 lakh to 10 lakh rupees, ठीक है. तो रूल ऑफ 72 आपको ये बताता है कि ये आपको मतलब सिंपल आपका 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट, उतने साल लगेंगे उस इन्वेस्टमेंट को डबल होने में, ठीक है. अंडर डैश रीपेमेंट द एंटायर लोन इज रीपेड इन द एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो ये आपका EMI इसमें ऑप्शन होता है, इट इज कॉल्ड बलून पेमेंट्स, ठीक है. सो इट इज जनरली नोन एज बलून पेमेंट्स, ठीक है. So a balloon payment is a lump sum payments made in conjunction with a loan, mortgage or commercial loans. The payment often made near the end of the term loan. The balloon payment is greater than what you may pay toward the loan on monthly basis because वो one time payments आपका हो रहा है, ठीक है. एक EMI ऑब्वियसली इससे छोटी होगी, हमारा जितना हमारा बचा हुआ अमाउंट था दैट वी पेड इन वन गो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड बलून पेमेंट. ओके, सो दिस इज इट. सो गाइज दीज वर सम मिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी, तो जिसमें आपके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी और कुछ आपके एप्लीकेशन बेस्ड और कुछ आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका, ठीक है. तो कल से हम लोग अपना मॉड्यूल डी आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरीज हैं, कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए तो सो यू कैन कनेक्ट में ओवर देयर, ठीक है. तो यहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को हमारे तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है. तो पढ़ते रहिए रेगुलर बेसिस पे आपका, ठीक है. कल हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से आपका कल से हम लोग मॉड्यूल डी स्टार्ट करेंगे. तो कल हम लोग टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मॉड्यूल डी का सबसे पहला यूनिट आपका इनकम टैक्स एंड GST ही है, पहला और दूसरा यूनिट. तो कल के सेशन में हम लोग इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइज. चलो, तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, सी यू टुमारो. थैंक यू.